हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अभी लोग थोड़ा धीरे धीरे लेट जुड़ेंगे, यूट्यूब पे ज्यादा जुड़ना पसंद करते हैं। सो विनम्र जी, कैसे चल रहा है डिपार्टमेंट? हर महीने जीएसटी सरकार कोई ना कोई नई अमेंडमेंट लेके आ रही है। कहने के लिए सरलीकरण हो रहा है। नहीं सर, इंडिया जैसी कंट्री में सरलीकरण पॉसिबल ही नहीं है। दो तरह की बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, उसके पास दो तरह के प्रेशर्स होते हैं। ब्यूरोक्रेसी के भी हाथ में नहीं होती सब चीजें। हम्म। दो भी क्या, तीन तरह के प्रेशर्स हैं। एक तो हम्म। जो लॉज को और पोर्टल को सिंक्रोनाइजेशन में रखना, जी। एक तो वो सबसे बड़ा कारण है चेंजेस का। हम्म। और एक सिंप्लीफिकेशन तो कारण है ही है चेंजेस का। और सर, दूसरा और तीसरा जो है रेवेन्यू की लीकेज को स्टॉप करना। अब जब आपके परसों परसों का एक केस है, मेरा अपना ही केस है। मतलब मेरे जानकार का केस है। मैं तो जीएसटी देखता नहीं है, लेकिन उनका फोन आ गया कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने गाड़ी रोक लिया। हम्म, मैंने कहा क्या दिक्कत है? हम्म, तो ग्लोव्स में डील करते हैं वो, मतलब जो सेफ्टी ग्लोव्स होते हैं, ठीक है, जो हैवी लेबर यूज करती है, तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स में। ठीक है। तो माल जा रहा था दिल्ली से गुवाहाटी, हम्म, और बुलंदशहर में रोक लिया। अच्छा। और रोकने का पीछे वजह कह रहे हैं कि भाई आपके बिल में जो है वो 6,500, बिल में? बिल में है क्वांटिटी 6,500, अच्छा। एक्चुअल क्वांटिटी है 13,000। ओके। तो वो कह रहे हैं भाई ग्लोव्स या सॉक्स पेयर में बिकती है। अच्छा। आप समझ रहे हो? अब बिल बनाने वाले ने एक हिसाब से 6,500, उनकी नॉर्मल आम टेंडेंसी की भाषा है। आप जाके बोलोगे कि हाँ। जुराबें दो, तो वो तो एक जुराब थोड़ी देगा भाई, एक जुराब देगा। या चल। ग्लोव्स दो। तो वो अड़ गए सर इस बात पे अच्छा। कि नहीं नहीं, बिल में 6,500 दर्जन है, हाँ, और एक्चुअल में निकली 13,000 दर्जन हाँ, ग्लोव्स। हाँ, तो ये अंडर बिलिंग का मामला है। हाँ, 2-3 दिन गाड़ी खड़ी रखी है, उसके बाद में कैसे सलटता है वो आपको पता ही है। हाँ। सलट के गाड़ी वहां से निकली है 2 दिन बाद। तो उन्होंने तो फिर 3 दिन में तो उन्होंने काट दिया होगा, एमओवी 1 2 वगैरह सब फॉर्म्स काट दिए हाँ होंगे हाँ, पेपर। 2 दिन खड़ी रही है सर, पता नहीं काटा क्या क्या नहीं काटा। आज उनको रिलीफ मिली है, वो भी कुछ ले दे के। अच्छा। कुछ ये ड्यूटी जमा करवाई है, क्या करवाई है पता नहीं। एक्चुअल में जो ऑन रोड का है ना, ये इसका कोई लॉ नहीं है यहाँ पर। जो लॉ की कंप्लायंस है ना, हम्म। वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो खुद जो कंसाइनर या कंसाइनी है वो तो वहाँ पे ऑन स्पॉट होता नहीं है, वहाँ पे ड्राइवर होता है। यस। यस। और ड्राइवर से बेसिकली प्रॉब्लम पता है कहाँ पे स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो ड्राइवर जब ये एमओवी 1 और 2 बनाते हैं ना, सबसे पहले ड्राइवर से ना ब्लैंक फॉर्म के ऊपर साइन करवा लेते हैं। अच्छा। ठीक है। उसके बाद उसमें ना कॉलम्स होते हैं कि जी मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया, उसको बाद में उसको फिलअप कर लेते हैं। उसको तो पता नहीं है क्या है। ठीक हम्म। है। आज जब आप उसको पूछते हो तो उसके हाथ में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता। लेकिन जब राइट। आप जाते हो अपील स्टेज के ऊपर, जाते हो वहां पे डॉक्यूमेंट मांगते हो, लेटर मांगते हो, फिर आपको पता चलता है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं हम्म। एक्चुअल में। तो वो बेसिकली ड्राइवर से सब कुछ साइन करवा लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल जिस टाइम पर या तो उसको ड्राइवर को बोला जाए, ट्रांसपोर्टर को बोला जाए कि जी अगर आपका ड्राइवर हमसे पूछे बिना किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर साइन करेगा, हम्म। ठीक है ना, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होगे हम्म। अगर गाड़ी रुकती है। हम्म। तो वहां पर उसको ड्राइवर को पूछो कि भी क्या मसला है, हमारे साथ बात करे, फिर उसके उसके बाद उसके ऊपर अपना जो है वो साइन करे वहां पर। राइट। क्योंकि उसको ड्राइवर को तो समझ नहीं है ना इस बात की कि क्या लॉ है क्या नहीं है। हम लोगों को इतने साल पढ़ने के बाद लॉ समझ में नहीं आया, तो एक ड्राइवर जो हाँ अनएजुकेटेड हाँ। उसको क्या लॉ समझ में आएगा? राइट। तो वो वहां पे बेसिकली क्या है कि जो 50% ऑफ गेम जो है ना, वो एमओवी 1 और 2 पे ही खत्म हो जाती है, बाकी तो फिर बस ऐसे ही है। जी। सो मैं 1-2 मिनट और इंतजार करते हैं सर। आज तो स्ट्रेंथ और भी कम रहेगी, संडे है बोल के, या पता नहीं लाइव पे हैं शायद कुछ। एनीवे, सो बेसिकली सर ये चीजें जो जब तक रहेंगी, तो
इसका जीएसटी के लिए जो इमेज है, जो एक एज ए टैक्स व्यापारी जो खुश हो रहा था सर, जीएसटी आने से पहले व्यापारी बड़ा खुश था, क्योंकि सरकार ने इसको इस तरीके से एडवर्टाइज किया था कि सरलीकरण हो जाएगा, सब हट जाएगा, एक टैक्स रह जाएगा, वन नेशन वन टैक्स, और आप इतने आसान हो जाएंगे। अभी आज मैं अगर प्रैक्टिकली किसी एसएससी से बात करता हूँ ना, वो ये कहता है जीएसटी आने से पहले हम बहुत खुश थे, मतलब हम इतने वो नहीं थे, बोले पूरा महीना हमारा तो रिटर्न भरने में ही निकल जाता है, वो ऑफिस में कम बैठते हैं, रिटर्न की तैयारियों में ज्यादा निकल जाते मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी इस महीने जो जीएसटीआर 3B जाएगी, अब इन्होंने 3B की प्रेजेंटेशन चेंज कर दी। हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो सितंबर की जो 3B की प्रेजेंटेशन है, ऑल टुगेदर इंटरफेस चेंज होने से हम्म इतना ज्यादा 3B को भरना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है हम्म कि मुझे नहीं लगता कि एक जो नॉर्मल अकाउंटिंग में जो इन्वॉल्व है या बिजनेसमैन खुद जो है उसको 3B को करेक्टली फिलअप कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो आपको एक 3B के ऊपर ना अलग से एक सेशन करवाना चाहिए, ये जितना ये अभी जो ये सेशंस चल रहे थे ना हम्म इसमें, तो हम्म एक इसमें अभी अभी जैसे मान लो 20 तारीख है, 16 तारीख है, तो इस टाइम पे अभी जैसे अभी सितंबर का था ना, सितंबर तो अक्टूबर में 11th को जो है वो GST की लास्ट डेट हो जाती है उसकी, तो 12 या 13 तारीख तक जो है ना वो 2B डाउनलोड हो जाती है। तो इस टाइम पे सब लोग 3B फाइल करने में लगे हुए हैं, और क्योंकि अभी पोर्टल के ऊपर 1 सितंबर से आया था जो नया जो फॉर्मेट था, तो ये फर्स्ट मंथ है जिसमें ये सारा इशू फॉल करेगा। हम्म, समझ गए। तो जो है ना वो इस टाइम पे सबसे ज्यादा समस्या तो लोगों को ये है कि इसको फिलअप कैसे करना है इसको 3B को, क्योंकि ये इसमें 3B जो है ना वो बड़े इसमें नए चैलेंजेस जो है वो आएंगे। जी जी सर। सो पार्टिसिपेंट्स को पूछ लें, बोल देंगे कि अगर किसी को कोई क्वेरी होगी 3B के बारे में तो वो भी बीच में ले लेंगे, ओके, किसी को भी 3B से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, वैसे तो जो 3B क्या, नए फॉर्मेट। जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप बेझिझक पूछें। मैं विनम्र गुप्ता जी से लगभग लगभग 10 साल से परिचित हूँ, और जो इनका नाम है वो अपने आप में इनको परिभाषित करता है, विनम्र, राइट। इनसे आप जितना पूछेंगे उतना ज्ञान पाएंगे, और आपको कभी लगेगा नहीं कि कोई मेरी चीज को सर ने इग्नोर कर दिया, कोई मेरी चीज का सर ने जवाब नहीं दिया, या कोई मेरी बात पे सर ने टाल मटोल कर दिया। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो जीएसटी से रिलेटेड 3B के अलावा भी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप विनम्र जी से बात करें, और विनम्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में अपने फोन नंबर या ईमेल आईडी, अपने कॉन्टेक्ट जरूर शेयर करके जाएं। अदरवाइज तो लिंक्डइन पे मैं विनम्र जी को देखता रहता हूँ, जीएसटी के ऊपर कोई भी अपडेट आता है तो वो डालते हैं, आप लिंक्डइन पे इनको जरूर फॉलो करें। जीएसटी में आपको कोई अपडेट आएगा, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, विनम्र जी का पोस्ट जरूर आ जाएगा उसके ऊपर। मतलब ऑनेस्टली आप इनको लिंक्डइन पे फॉलो करेंगे तो आपको कोई डाउट रहेगा नहीं जीएसटी के ऊपर, राइट। सो ऐसे हैं हमारे सीए विनम्र गुप्ता जी, अमृतसर से सर हैं, और रिनोन्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत आर्टिकल, बहुत मैगजीन्स में, और सैकड़ों सेशन सर जीएसटी के ऊपर ले चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा सीए विनम्र गुप्ता जी से, वो आए और अपना टॉपिक रखें। विनम्र गुप्ता जी। थैंक यू गौरव जी, पहले तो इतनी बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन दी, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि आप जो है वो मुझे मौका देते रहते हैं अपने फोरम से कुछ ना कुछ जो है वो जीएसटी के बारे में बात करने के लिए। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आती रहती हैं। तो एक तो जो आज का टॉपिक है डिपार्टमेंटल ऑडिट का, क्योंकि देखिए जो अगर हम लॉ के एंगल से डिस्कस करेंगे तो मे बी डिस्कशन बड़ी वो ड्राई हो सकती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें तो प्रोसीजरल हैं कि डिपार्टमेंट ऑडिट होता क्या, ऑडिट होता कैसे है, लेकिन जो प्रैक्टिकल हमें इश्यूज अराइज होते हैं वो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि हम रूटीन में हम डील करते हैं। ठीक है, तो मैं एक
सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो पर्टिकुलरली जो डिपार्टमेंटल ऑडिट का ये जो सेशन है, आप इसको ये मत कंसीडर कीजिए कि भाई जी ये जो है वो एक स्पेसिफिक कोई टॉपिक बेस्ड सेशन है, बल्कि ये जो टॉपिक है इसमें जिस तरह की डिपार्टमेंट क्वेरीज जो है वो रेज करता है। मैंने हालांकि कुछ 10-12 क्वेरीज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने रेज किए, जो कि नॉर्मली डिपार्टमेंटल ऑडिट्स में रेज की जाती हैं। और उसके लिए मेरा तो विचार था कि लास्ट जो हाफ एन आवर है वो उसके सेशन के लिए उसके लिए हम डिवोट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इवन फ्रॉम द वर्ड इवन स्टार्ट गो, कि हम जैसे सेशन शुरू भी करें, आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो जो कि आपको लगता है कि ड्यूरिंग ऑडिट जो रेज की जा सकती हैं, तो वो आप प्लीज आप जो है वो आप रेज कीजिए, तो ताकि हम उसके ऊपर जो है वो उसको कंसिडर करें, और ताकि क्योंकि डिपार्टमेंट जो ऑडिट में नॉर्मली वही सब क्वेरीज जो है वो रेज करता है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आ रही थी, कुछ लोग व्हाट्सएप कर रहे थे हमें कि वो लोग इसमें होस्टिंग में या स्क्रीन पे रहना चाहते हैं ताकि सर हाँ से जब भी बातचीत हो तो वो कर हाँ सकें। बिल्कुल तो जो आप। लोग भी ऐसे रहना चाहते हैं पैनल पे, वो हैंड रेज कर दें, मैं उनको पैनल पे ले लेता हूँ। इसमें कितने लोग आ सकते हैं पैनल पे? सर सारे ही आ सकते हैं। हाँ, तो फिर तो सभी को ले लो पैनल पे। सभी को ले लें? हाँ, उससे ये ना किसी ने भी क्वेरी रेज करनी होगी तो वो क्वेरी रेज कर सकते हैं इजीली। जी, लेकिन सर वो फिर वो घचपच ना हो जाए, वो आवाज का इशू रहेगा। देख लीजिए। जिसको जिनको आना है उनको ले लेते हैं। जिनको भी आना रहेगा उनको पैनल पे ले लेंगे, जिनको भी लगता है उनको पैनल पे रहना है उनको पैनल पे ले लेंगे। जी, यस सर, यू कैन प्लीज स्टार्ट। नंबर जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। गौरव जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? विजिबल है। तो सर मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ड्यूरिंग सेशन भी अगर किसी की भी कोई क्वेरीज हो जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड, जो कि आपको लगता है कि डिपार्टमेंट ड्यूरिंग ऑडिट, अभी क्योंकि अगर ऑनगोइंग ऑडिट्स भी चल रहे होंगे तो उसमें उसमें भी कुछ क्वेरीज आ रही होंगी, या ऑलरेडी जो क्वेरीज आ चुकी हैं मे बी वो शो कॉज नोटिस की स्टेज के ऊपर है, या किसी भी टाइप की क्वेरीज हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इवन ड्यूरिंग दी सेशन भी, आप चलते हुए सेशन में भी आप उसको स्टॉप करके वी कैन गो अबाउट दोज क्वेरीज, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बेसिकली क्या है कि एक प्रोसीजरल टॉपिक है, जिसमें कि हम इनिशियली जो है वो डिस्कस करेंगे कि जी ऑडिट होता क्या है, कैसे होता है, डिपार्टमेंट की क्या जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो उसके लिए रहती है। लेकिन इसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि जो कि हम ड्यूरिंग ऑडिट जो हम इश्यूज फेस करते हैं, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ इश्यूज फ्रेम किए हैं, लेकिन जो आपके इश्यूज होंगे आई वुड लाइक टू हियर इश्यूज फ्रॉम यू सो दैट आई कैन रिप्लाई अकॉर्डिंगली। तो अभी तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सर अगर हम ये देखें कि जीएसटी ऑडिट की बात करें, तो जीएसटी ऑडिट में सबसे पहले लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कि व्हाट इज ऑडिट। अब ये ऑडिट एक ऐसा वर्ड है, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत पुरानी है। 1944 में जो सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट हुआ करता था, जिसमें से कि वर्ड सॉल्ट हटा दिया गया था बाद में, मे बी इन द ईयर 2000 और सो। तो इतना पुराना इनडायरेक्ट टैक्स लॉज जो है वो हमारे पास कंट्री में चल रहे हैं, और कहीं पे भी वहाँ पे भी ऑडिट की भी प्रोविजंस थी, सब कुछ था, लेकिन कभी ऑडिट क्या होता क्या है ऐसा किसी भी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में मेंशन नहीं किया गया था। तो जीएसटी लॉ में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि यहाँ पर वर्ड ऑडिट को डिफाइन किया गया है।
तो जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल ऑडिट की कि जो कि डिपार्टमेंट ने ऑडिट करना है, तो डिपार्टमेंट को भी अपने ऑडिट के टाइम पर किसी ऑडिट के दायरे के अंदर रहना पड़ेगा कि जो कि डिफाइंड है जीएसटी लॉ में। तो हम देखें कि ऑडिट की जो डेफिनेशन जो है वो कितनी वाइड है और या कितनी नैरो है। लेट अस ट्राई टू सी थ्रू व्हाट इज रिटन इन द लॉ। तो जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 है वो ऑडिट को डिफाइन करता है। और सबसे पहले ये सेक्शन क्या कहते हैं, ऑडिट मींस, इसका मतलब है कि ये एक इंक्लूसिव सॉरी मतलब एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। कोई इसके अंदर जो दिया है उसके बाहर जो है वो जीएसटी के पर्पसेस के लिए वी विल नॉट बी डिफाइनिंग द ऑडिट। तो ऑडिट मींस द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो वर्ड रिकॉर्ड, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ये बड़ी वाइडर टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज की है। इसमें देखा जाए तो हर एक तरह का जो डॉक्यूमेंट जो है, क्योंकि जो चीज रिकॉर्ड में और रिटर्न में कवर नहीं होती उसको उन्होंने अदर डॉक्यूमेंट्स में उसको कवर कर दिया। तो क्योंकि रिटर्न में तो जो है वो कवर होंगी सिर्फ आपकी जो जीएसटी की रिटर्न होगी, तो उसकी एग्जामिनेशन तो है ही है। इसके अलावा जितना भी आपका रिकॉर्ड्स में आपका जितना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है जो कि आप रूटीन में बनाते हैं वो है, और इसके अलावा और किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट है वो भी इसकी एग्जामिनेशन के दायरे में आ जाता है, विच इज मेंटेन्ड और फर्निश्ड। तो देखिए ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं आने वाली डिस्कशन में भी ये दो वर्ड्स के ऊपर बार बार हम जिक्र करेंगे। तो काइंडली टेक नोट ऑफ दीज टू वर्ड्स, मेंटेन्ड और फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो ये यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो आपने अकाउंट्स देखिए, एक तो रिकॉर्ड्स वो हैं जो कि जीएसटी लॉ की रिक्वायरमेंट की वजह से हम मेंटेन करते हैं। जीएसटी लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पर है, वो है सेक्शन 35 में, रूल 56 में, जो कि हम कह सकते हैं कि जी जीएसटी लॉ जहाँ पर बात कर रहा है कि जी आपको ये वाले रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। लेकिन जो ऑडिट है वो दैट इज नॉट कन्फाइंड टू रिकॉर्ड्स व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द जीएसटी लॉ, बल्कि वो इसके भी आगे जाता है कि इवन द रिकॉर्ड्स व्हिच आर फर्निश्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। इसका मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं किसी ऐसे लॉ के अंदर हैं जो कि आज की डेट में डेड लॉ है, तो उसके एग्जामिनेशन के साथ हमारा जो ऑडिट का कोई लिंक नहीं है। ठीक है। लेकिन जो लॉ आज की डेट में लाइव है, जो अलाइव है लॉ, और उसके अंदर आप किसी डॉक्यूमेंट को फर्निश करते हैं या आप जीएसटी लॉ में, और ऐसा भी नहीं कि आपने किसी डॉक्यूमेंट को, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक ऐसा रिकॉर्ड रख रहे हैं, मान लीजिए एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है। अगर आप समझते हैं कि जो रूल 56 है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के केस में आपको साइट वाइज जो है वो डिटेल रिकॉर्ड रखने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या कॉम्पोजिशन डीलर के केस में आपको स्टॉक की मेंटेनेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया है और आप उसको फर्निश कर रहे हैं या आप उसको फर्निश कर रहे हैं, तो उस रिकॉर्ड की एग्जामिनेशन भी ऑडिट के दायरे में आएगी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वो रिकॉर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट बना रहे हैं या किसी और लॉ के अंदर बना रहे हैं, या अगर आप उसको किसी लॉ के अंदर नहीं भी बना रहे लेकिन आप उसको मेंटेन और फर्निश आप कर रहे हैं, तो दैट इज विद इन द परव्यू ऑफ दिस ऑडिट प्रोविजंस। तो यहाँ पे बड़ी वाइडर डेफिनेशन दी है, और इस सारे रिकॉर्ड की एग्जामिनेशन जो है दैट इज व्हाट इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। और फिर what this examination is carried for, what is the purpose of this examination? The purpose of this examination is to verify the correctness of number 1 turnover declared, number 2 taxes paid, number 3 refund claimed and input tax credit availed, and to assess his compliance with the provisions of this act or rules made thereunder। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, टर्नओवर की, टर्नओवर जो डिक्लेयर्ड है उसकी करेक्टनेस को चेक करना। देखिए यहाँ पर क्या फर्क है, जो ऑडिट जो जीएसटी ऑडिट में और एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, वहां पे वी आर कंसर्न्ड विद द ट्रूथ एंड फेयरनेस, जबकि जो जीएसटी में ऑडिट कर रहे हैं वहां पर वी आर बीइंग मोर यू कैन से मोर एक्यूरेट, वी आर टर्निंग टुवर्ड्स on more being more accurate, and we are trying to concentrate on the correctness and not only the truth and fairness। मतलब means even if your things are 99.5% correct, then that is not a complete correctness। They might be your accounts might be true and fair, but we are requiring here to provide you the correct accounts, correct turnover, what is your correct turnover, what that is what they are trying to strive at। तो यहाँ पे आपकी जो turnover है, what is the correctness of your turnover, what is the correctness of your taxes paid, refund claimed, input tax credit availed,
यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, अभी देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हिच इज टेकन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ले लिया लेकिन अवेल नहीं किया, तो वी आर नॉट कंसर्न्ड विद एग्जामिनेशन ऑफ सच इनपुट टैक्स क्रेडिट, वी आर ओनली concerned with the input tax credit availed and to assess his compliance with the provision of this act or rules made thereunder। और जितनी भी एक्ट के अंदर जितनी भी compliances हैं उनको असेस करना कि whether the entire provision of this act or the rules made therein are whether they are being correctly complied with or not। तो ये एक ऑडिट की डेफिनेशन दी है। अगर इवन की अगर आप इसको जी, हालांकि जो जीएसटी आज की जो हमारी डिस्कशन है वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है जीएसटी और 9 या 9C नहीं है, लेकिन अगर आप क्लोजली देखेंगे जीएसटी 9 और 9C को, तो वहां पर भी बेसिकली उसकी जो फ्रेमिंग है वो इसी ढंग से हुई है। जैसे कि यहाँ पर अगर वो पूछ रहे हैं कि जी ऑडिट जो किया जाता है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर, तो अगर आप देखेंगे जीएसटी 9 में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो टेबल 4 है वहां पर हम टर्नओवर की क्या करेक्टनेस है, या इवन की टेबल 5 ऑफ जीएसटी 9C, वहां पर भी जब हम टर्नओवर की रिकॉन्सिलेशन करते हैं विद जीएसटी 9 एंड दी अवर एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स, तो वहां पर भी हम टर्नओवर की करेक्टनेस को सर्टन कर रहे होते हैं। फिर जब जीएसटी 9C में जब हम टेबल 9 में मूव करते हैं और वहां पर हम एक रेट वाइज रिकॉन्सिलेशन वहां पर मांगते हैं, जिसमें कि आरसीएम की और फॉरवर्ड चार्ज की दोनों की रेट वाइज रिकॉन्सिलेशन आती है, तो वहां पर वी आर ट्राइंग टू सर्टेन दी करेक्टनेस ऑफ द टैक्सेस पेड। फिर जहां तक रिफंड्स की बात है, तो आप देखेंगे कि जीएसटी 9 में हालांकि वो फील्ड मैंडेटरी नहीं है, वहां पर भी जो आपने जितने भी रिफंड्स की आपने एप्लीकेशन दी, जितने भी फंड्स आपने क्लेम किए, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर जीएसटी 9 में देने की रिक्वायरमेंट है। और फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड की करेक्टनेस, अगर आप टेबल 12 और टेबल 14 देखेंगे जीएसटी 9C का, या इवन फॉर दैट मैटर अगर आप टेबल 6, 7 और 8 देखेंगे, तो दे आर ऑल एम्ड एट अराइविंग एट द करेक्टनेस ऑफ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, कि कहीं आपने कोई एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट तो नहीं अवेल कर लिया। और फिर ये जनरल कंप्लायंसेस, पूरे कंप्लीट लॉ की कंप्लायंसेस जो है, दैट इज व्हाट द स्कोप ऑफ दिस ऑडिट इज। तो बेसिकली चाहे जीएसटी 9 या 9C है या हमारा डिपार्टमेंटल ऑडिट है, तो ये सभी जो ऑडिट की एक जो बेसिक डेफिनेशन जो है उसके साथ बंधे हुए हैं। अब हम लेट अस कम टू द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस डिपार्टमेंटल ऑडिट। हम सब जानते हैं कि जो डिपार्टमेंटल ऑडिट है दैट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 65 एज वेल एज रूल 101। तो मैंने यहाँ पर क्या एक कोशिश की है कि जो सेक्शन और उससे जो रेलेवेंट जो रूल है उसको कंबाइन करके लेट अस ट्राई टू रीड इट दैट वे। तो सबसे पहले जो सेक्शन 65(1) है, वो क्या, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई भी ऑफिसर, फॉर एग्जांपल आपने एक डिपार्टमेंट में एक ऑडिट विंग बना दिया और उस ऑडिट विंग में एक ऑडिट ऑफिसर को, जो मान लीजिए कि स्टेट ऑफिसर है या सेंट्रल ऑफिसर है, आपने उसको एज ऑडिट ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, तो क्या वो अपनी मर्जी से, क्या वो किसी का कोई ऑडिट कर सकता है? नहीं। सबसे पहले वही व्यक्ति ऑडिट कर सकता है, द कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम बाय वे ऑफ जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर मे अंडरटेक ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो जो व्यक्ति, कौन, कमिश्नर खुद कर सकता है, या फिर जिस ऑफिसर को वो ऑथराइज करेगा बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर, वो ही किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति का ऑडिट कर सकता है। अब जब हम बात करते हैं कि रजिस्टर्ड व्यक्ति का ऑडिट कर सकता है, इसका मतलब है कि एक जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है उसका ऑडिट नहीं किया जा सकता। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अराइज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, क्या जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है जिसने कि कभी रजिस्ट्रेशन करवाई ही नहीं, उसका ऑडिट किया जा सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ लॉ में स्पेसिफिकली लिखा है कि रजिस्टर्ड आदमी का ही ऑडिट किया जा सकता है। फिर अगर मान लीजिए एक आदमी के पास रजिस्ट्रेशन थी और बाद में उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई, तो क्या आफ्टर कैंसिलेशन अगर ऑडिट का जो है वो ऑर्डर दिया जाता है या उसका ADT 1 इशू किया जाता है, तो क्या उस केस में उसका ऑडिट किया जा सकता है? तो ये एक अब एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया। तो डिपार्टमेंट जो है वो बोलेगा कि जी हम इसका ऑडिट कर सकते हैं ड्यूरिंग दी पीरियड द पर्सन वाज रजिस्टर्ड, ठीक है। और जो सेक्शन 63 है, क्योंकि आप देखिए जो सेक्शन 63 है जो CGST एक्ट का, वो बात करता है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के असेसमेंट के बारे में। तो वो जो है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के केस में सिर्फ आप सेक्शन 63 में असेसमेंट कर सकते हैं, ऑडिट नहीं कर सकते। बट डिपार्टमेंट माइट कंटेंड अपॉन कि ड्यूरिंग द पीरियड फॉर व्हिच ही वाज रजिस्टर्ड वी कैन एग्जीक्यूट दैट ऑडिट। तो यहाँ पर ये एक मूट पॉइंट जो है वो अराइज हो जाता है, ठीक है। फिर ये बात कर रहा है यहाँ पर कि मे अंडरटेक ऑडिट ऑफ एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर सच पीरियड एट सच फ्रीक्वेंसी एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड।
तो अब वो पीरियड क्या, किस पीरियड का किया जा सकता है, दैट इज डिफाइंड इन रूल 101 सब रूल 1। वहां पे पीरियड के बारे में लिखा है कि या तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का या पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर Excuse का। me, sir. Someone is writing screen is not coming. I think screen is coming. Screen is visible to all of you. Please write in the chat box if screen is visible to you. Yes, yes. It's perfectly visible to everyone. Please check your internet. Those who are writing that screen is not visible, please check your connection. Thank you, sir. Please continue. थैंक यू। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि कौन से पीरियड का ऑडिट किया जा सकता है, फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट किया जा सकता है। अगर फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि देखिए ये जो रूल 101 है, देयर हैज बीन एन अमेंडमेंट इन दिस रूल 101, क्योंकि बिफोर अमेंडमेंट लॉ में क्या लिखा था जी कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट किया जा सकता है। अब 17-18 में क्या प्रॉब्लम आ गई, 17-18 इन इटसेल्फ इज नॉट ए कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, इट इज ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो रूल 101 को स्पेसिफिकली अमेंड किया गया कि जी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर का भी ऑडिट किया जा सकता है और मल्टीपल ईयर्स का भी ऑडिट किया जा सकता है। इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल यू आर एग्जीक्यूटिंग एन ऑडिट फॉर पीरियड 17-18 टू 19-20, सो दिस इज एन ऑडिट ऑफ मल्टीपल ईयर्स। तो ऑडिट फाइनेंशियल ईयर का, पार्ट ऑफ ईयर का और मल्टीपल ईयर्स का ऑडिट भी किया जा सकता है। नाउ at what place this audit is to be conducted। तो जो सेक्शन 65 जो सबसेक्शन 2 है वो कहता है the officer referred to in subsection 1 में conduct audit at the place of business of the registered person or in their office। तो यहाँ पे ऑप्शन देता है कि यहाँ तो ऑडिट जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी प्लेस पे किया जाएगा, या फिर ये ऑडिट कहाँ किया जाएगा, जो ऑफिसर है उसकी ऑफिस में किया जाएगा। अब जो हमारे पास जो जीएसटी ऑडिट मैनुअल है 2019 की, वो इसके बारे में क्या कहती है कि कहाँ पर ऑडिट किया जाएगा। तो उसमें लिखा है कि जी दो तरह के ऑडिट्स किए जाए हो सकते हैं। वन इज द डेस्क बेस्ड ऑडिट। डेस्क बेस्ड ऑडिट का मतलब है कि जो ऑडिट ऑफिसर के ऑफिस में किया जाएगा, और प्रीमाइसिस बेस्ड ऑडिट का मतलब है कि जो ऑडिट जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो असेसी है, उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे किया जाएगा। तो डेस्क बेस्ड ऑडिट के बारे में जो जीएसटी ऑडिट मैनुअल है वो क्या कहती है कि इन व्यू ऑफ द एम्फसिस ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, इंटेलिजेंट एनफोर्समेंट एंड प्रोवाइडिंग नॉन इंट्रूसिव environment to the taxpayer, it has been decided to move from the present system of premises based audit to the desk based audit। तो ease of doing business की वजह से, ताकि रजिस्टर्ड पर्सन को कोई दिक्कत ना हो, तो वी आर मूविंग फ्रॉम premises based audit to desk based audit। ठीक है, इन केस ऑफ स्मॉल कैटेगरी, लेकिन वो सिर्फ कहां पर कर रहे हैं, जो कि स्मॉल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स है, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स हैं ऑडिट के पर्पसेस के लिए इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। जो लार्ज और जो मीडियम कैटेगरी है उसके केस में तो प्रीमाइसिस बेस्ड ऑडिट ही होगा, लेकिन स्मॉल कैटेगरी के केस में एग्जेम्पशन दी गई है कि वी आर मूविंग ऑन टू फ्रॉम प्रीमाइसिस बेस्ड ऑडिट टू द डेस्क बेस्ड ऑडिट। अब कौन से लार्ज, स्मॉल में और मीडियम में फॉल करेंगे वो डिपेंड करता है, हर एक जो ऑडिट कमिश्नरेट है उसको कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं बाय डीजी ऑडिट। तो उन गाइडलाइंस के मुताबिक हर एक ऑडिट कमिश्नरेट जो है हर साल के लिए जो फिक्स करता है कि भाई हमारा जो स्मॉल, लार्ज और जो मीडियम वाली कैटेगरी है उसमें कौन कौन से टैक्स पेयर फॉल करेंगे। उस कैटेगरी के मुताबिक जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनका ऑडिट बजाय प्रीमाइसिस बेस्ड ऑडिट होने के वो एक डेस्क बेस्ड ऑडिट भी हो सकता है। लेकिन however in case of non cooperation by the taxpayer, premises based audit may be carried out after approval by the commissioner। तो क्या है कि उस डेस्क बेस्ड ऑडिट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन केस ऑफ नॉन कॉपरेशन इनटू द प्रीमाइसिस बेस्ड ऑडिट। फर्दर इन केस वेयर इट इज फेल्ड at any stage of the audit that there are inherent weakness in the internal control system of taxpayers, the officer may switch to the premises based audit with the approval of the commissioner। तो अगर internal control system में कोई weaknesses हैं या नॉन कॉपरेशन है टैक्स पेयर की, तो डेस्क बेस्ड ऑडिट को प्रीमाइसिस बेस्ड ऑडिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन 65(3) है वो कहता है कि 15 डेज का नोटिस दिया जाएगा ऑडिटी को, और ये 15 डेज बेसिकली 15 वर्किंग डेज हैं। जो 15 वर्किंग डेज हैं, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 15 डेज एंड वर्किंग डेज, क्योंकि वर्किंग डेज में जो आपके सैटरडेज और जो संडेज जो हैं वो आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे, या जहाँ पर ऑफिशियल हॉलीडेज हैं वो भी डेज आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो 15 डेज का आपको टाइम दिया जाएगा, और इसके लिए जो आपको नोटिस दिया जाएगा दैट विल बी इशूड इन फॉर्म ADT 01। अब जिन लोगों को ADT 01 इशू कर दिया कि जी 15 डेज का टाइम दिया कि आप इसको रिस्पॉन्ड करिए,
और वो लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उस केस में गवर्नमेंट जो ऑफिसर जो है क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करेगा। तो हमारे पास वो मेथोडोलॉजी है, वो जीएसटी ऑडिट मैनुअल 2019 में दी गई है। तो उसके जो रेलेवेंट पैराग्राफ है मैं उसको रेफर कर रहा हूँ। सबसे पहले वो ऑफिसर एक रिमाइंडर इशू करेगा। अगर उस रिमाइंडर को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, तो वो एक और लेटर इश्यू करेगा और उसमें पैनल प्रोविजंस मेंशन करेगा कि जी अगर आप इसको मेरी ऑडिट लेटर को कंप्लाई विद नहीं करते, देन यू विल बी मेट विद सर्टेन प्रोविजंस अंडर सेक्शन 122, 123 एंड 125। 125 इज जनरल पेनल्टी, 122 इज द स्पेसिफिक पेनल्टीज। तो आपको ऑडिट जो पेनल्टी की जो प्रोविजंस हैं, यू विल बी मेट विद दोज प्रोविजंस। अब क्या है कि वो सेकंड जो फर्स्ट उसको लेटर लिखेगी, रिमाइंडर को भी रिस्पॉन्स नहीं किया, जो एक और लेटर लिखी थी, तो जो 3 लेटर्स लिखेगी, तीनों को उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसके बाद वो एक नोट बना के जो एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट को वो ऑफिसर भेज देगा। और फर्दर जो उसकी जो डिटेल्स हैं, वो डायरेक्टर जनरल जो डीजी ऑडिट है, उसको भी वो डिटेल्स जो है वो भेज दी जाएँगी, कि ताकि उसकी जो रिस्क रेटिंग है उस व्यक्ति की, जो उसकी जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग है, उसको दोबारा इवैल्यूएट किया जाए और उसकी जो जीएसटी की कंप्लायंस रेटिंग जो है, वो डाउनग्रेड कर दी जाएगी। यानी कि उस व्यक्ति का जो रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा और आने वाले टाइम में उसको डिपार्टमेंट की तरफ से ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए अगर जो एडीटी 01 जो आता है, तो वो नॉर्मली क्या होता है कि बड़ा एक बेसिक सा उसमें क्वेश्चनेयर होता है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो एडीटी 01 आता है, वी शुड ट्राई टू आंसर इट बैक एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। क्योंकि उसके बाद तो क्या है कि जब आपका, क्योंकि वो दैट इज़ ए काइंड ऑफ ऑफिशियल लेटर व्हिच इज़ ऑफ कोर्स ऑल द लेटर्स आर ऑफिशियल। लेकिन उसके साथ एक स्पेसिफिक प्रोसीजर जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिसकी वजह से आपकी कंप्लायंस रेटिंग जो है वो इमीडिएटली डाउन हो सकती है। तो एट लीस्ट वी शुड ट्राई टू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड एडीटी 01। अब आपका ऑडिट आपका जो है वो स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले जब आपका कब ऑडिट माना जाएगा कि आपका ऑडिट कब स्टार्ट हुआ? तो एक जो सेक्शन 65 हो रहा है उसमें कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट की एक डेफिनेशन दी है। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट शैल मीन द डेट ऑन व्हिच द रिकॉर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड फॉर बाय द टैक्स अथॉरिटीज आर मेड अवेलेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। तो जिस दिन आप जितने भी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो आपने अवेलेबल करवा दिए, और द एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस व्हिचएवर इज लेटर। या फिर जिस दिन वो जो ऑडिट आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर एक्चुअली इंस्टीट्यूट किया गया, दोनों में से जो भी लेटर डेट है, उस दिन वो डेट मानी जाएगी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। अब देखिए कि जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अब नॉर्मली क्या होता क्या है कि जो ऑडिट का प्रोसीजर क्या है कि आपको एडीटी 01 आपको इश्यू कर दिया, तो जब आपको एडीटी 01 जब आपको इश्यू कर दिया और आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड कर दिए, तो इट मीन्स यू हैव मेड अवेलेबल ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो एक आपकी डेट फ्रीज हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट सोचता है कि जी हम इसका प्रीमाइसिस बेस्ड ऑडिट करेंगे, या वो आपको डेस्क बेस्ड या प्रीमाइसिस बेस्ड ऑडिट के लिए आपको एक लेटर लिखता है। तो जब वो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आकर जब वो ऑडिट कर देते हैं, अगर मान लीजिए उसके बाद वो आकर वहाँ पर वो ऑडिट करते हैं, तो जिस दिन वो वहाँ पर वो आएँगे और जब उसकी जो फाइनल जो ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी, अगर उसके पीरियड में 3 महीने से ऊपर का पीरियड है, तो डेफिनिटली यू कैन चैलेंज दैट फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली मैंने अपने खुद कई केसेस में मैंने जो है वो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट को चैलेंज किया ऑन दिस बेसिस, बिकॉज़ द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वाज़ बियॉन्ड period of 3 months from the date of commencement of audit, which is defined in the this explanation. So this is something very very important that we have to take care. What is the date of commencement of audit? Date of commencement of audit is the date on which you are making available all the documents and records to the proper officer. One date. Second date is the date of institution of audit on your place of business. So whichever date is later, that is the date of commencement of audit. From that very date, you have to count 3 months. If your final audit report in which certain objections are put in, which are adverse to the assessee, then definitely he can put a challenge on those objections, saying that the final audit report in itself is time-barred document, so that is not binding on me. Maybe the show cause notice based upon that might get shattered. So ये जो date of commencement of audit, period of 3 months starting from the date of commencement audit, this is something very important that we have to take cognizance of. Then it says if the commissioner is satisfied the audit in respect of registered person cannot be completed within 3 months, he may for the reasons to be recorded in writing extend the period by further period not exceeding 6 months. तो वो फर्दर पीरियड के लिए और 6 महीने के लिए पीरियड एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन नॉर्मल हमने सर्कमस्टेंसेस में देखा है ऐसी कोई एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया नहीं जाता।
तो ये जो नॉर्मल 3 महीने का पीरियड है, उसी के अंदर जो ऑफिसर को ये ऑडिट कंप्लीट करना होता है, तो ये कोई इंडेफिनिट पीरियड का ऑडिट नहीं है। नाउ लेट अस कम टू कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन, कि उसको बेसिकली जो लॉ में, क्योंकि अगर आप जीएसटी ऑडिट मैनुअल में जाएंगे तो वहां पर तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन एज पर लॉ क्या है स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑडिट मैनुअल भी कहीं पे भी आपका जो स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन लॉ में डिफाइंड है उसके बाहर नहीं जा सकती। तो स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन क्या, दैट इज डिफाइंड इन रूल 101 सब रूल 3, द प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज्ड टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ द रिकॉर्ड्स and the books of accounts of the registered person shall, with the assistance of the team of officers and officials accompanying him, verify the documents on the basis of which books of accounts are maintained and returns and statements furnished under the provisions of the act and the rules। तो क्या वो वेरीफाई करेगा उन डॉक्यूमेंट्स के जिसके बेसिस के ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी है, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, अब नाउ ही इज गोइंग to next level of evidence. Now he is looking at his verification is based on those documents on the basis of which those books of accounts have been maintained and the returns and statements have been furnished under the GST law. Then he will also examine the correctness of the turnover. We already checked the कि जो turnover की correctness check करना audit की definition का part है, verification of the correctness of the turnover. So he will aim at the correctness of the turnover, exemptions and deductions claim। तो जितनी भी आपने exemptions और deductions आपने जो है वो claim की हैं, चाहे आपने exemption जो है वो claim की है कि आपके जो गुड्स जो हैं वो आपके 25 किलो से ऊपर की पैकिंग के हैं, क्योंकि वो प्री पैकेज्ड और लेबल्ड कमोडिटी के दायरे में नहीं आते, या आपने किसी भी तरह की आपने एग्जम्पशंस जो है सर्विसेज में आपने किसी भी तरह की एग्जम्पशंस क्लेम की हैं, तो उनकी करेक्टनेस को चेक करना। और जितनी भी आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं उसकी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 1/3 ऑफ लैंड की, अगर आप रियल एस्टेट में तो 1/3 ऑफ लैंड की आप डिडक्शन जो है वो क्लेम कर रहे हैं, तो इन सभी डिडक्शंस को और एग्जम्पशंस को चेक करना। और रेट ऑफ टैक्स अप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो आप क्या आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वेदर योर क्लासिफिकेशन इज करेक्ट, क्या आपने उसके ऊपर अकॉर्डिंगली करेक्ट रेट ऑफ टैक्स अप्लाई किए। सॉरी, द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड एंड यूटिलाइज, आपने क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल और यूटिलाइज किया था, तो उसको एग्जामिन करना। रिफंड क्लेम अदर एंड अदर रेलेवेंट इश्यूज एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन हिज ऑडिट नोट। तो ये जो प्रॉपर ऑफिसर जो है इन सभी को एग्जामिन करेगा और उसके बेसिस के ऊपर जो उसकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो उसको ऑडिट नोट्स में नोट करेगा। तो जो ऑडिट नोट्स जो हैं वो उसके ऑफिसर के, दे आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वेयर ही इज डॉक्यूमेंटिंग ऑल दोज ऑब्जर्वेशन। फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी ड्यूटी है, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि अगर आपकी ऑडिट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन डेफिनेटली रेज एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस दोज क्वेरीज। फिर टिल देन आई विल बी प्रोसीडिंग विद द टॉपिक। अब नेक्स्ट जो है, अब क्या ड्यूटी है एक रजिस्टर्ड पर्सन की हु इज गेटिंग दिस ऑडिट कंडक्टेड। हिज ड्यूटी इज टू प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटी टू वेरीफाई द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की उसकी वेरिफिकेशन में फैसिलिटी प्रोवाइड करना और जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें असिस्ट करना। अगर अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि क्या है कि नॉर्मली जब आप इनकम टैक्स आप सर्वे की प्रोविजंस देखते हैं, मान लीजिए सेक्शन 133A देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं सेक्शन 65(5) में, तो उसमें एक चीज आप देखेंगे मिसिंग है कि यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि जी इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन में फैसिलिटेट करना इज हिज ड्यूटी। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या ड्यूरिंग ऑडिट इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन की जा सकती है। अगर हम जीएसटी ऑडिट मैनुअल का पेज 35 देखेंगे तो वहां पर स्पेसिफिकली जहां पर कि ट्रेडर्स की ऑडिट की चेकलिस्ट लिखी हुई है, वहां पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि चेक वेदर द स्टॉक इन ट्रेड फाउंड एट द टाइम ऑफ ऑडिट विजिट्स टैलीज विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो वहां पर तो ऑडिट मैनुअल में तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जी आपको ये स्टॉक जो है आपको वेरीफाई करना है कि क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ टैली करता है। लेकिन अगर हम लीगल प्रोविजंस को देखें तो क्या ये जो जीएसटी ऑडिट मैनुअल में लिखा है क्या ये जीएसटी ऑडिट के परव्यू में आता है। मेरा जो इसके बारे में ओपिनियन है वो ये है कि पहली बात है कि कहीं पर भी 65(5) में ऐसा नहीं लिखा कि जी जो रजिस्टर्ड पर्सन है ही विल प्रोवाइड फैसिलिटी इन इन्वेंट्री ऑफ दोज स्टॉक।
नंबर 2 जो सेक्शन 71 which talks about the access to the premises, अगर हम उसकी लैंग्वेज देखें तो उसकी लैंग्वेज जो है वो कहती है an officer under this act authorized by the proper officer not below the rank of joint commissioner. तो जॉइंट कमिश्नर की सबसे पहले तो आपको जॉइंट कमिश्नर की ऑथराइजेशन चाहिए, ठीक है। जब एक ऑफिसर को सेक्शन 65(5) में जब उसको ऑथराइज किया जाता है, उसको ऑथराइज किया जाता है फॉर द पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट अंडर सेक्शन 65। अब अगर उसको 71 में एक्सेस टू प्रीमाइसेस की अगर उसको पावर्स एक्सरसाइज करनी है तो सबसे पहले तो उसको जॉइंट कमिश्नर से ऑथराइजेशन चाहिए। शैल हैव एक्सेस टू एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू इंस्पेक्ट books of accounts, documents, computers, computer programs, computer software, whether installed in computer or otherwise, and such other things he may require and which may be available at such place for the purpose of carrying out of any audit, ठीक है। with scrutiny, verification and checks। तो मेरा यहाँ पर जो मानना ये है कि what is the purpose of carrying out audit, whether any of the purposes of the audit, if you look at the definition of audit that is given in section 213, whether it anywhere asks you to verify the correctness of the stocks lying at the place of business, the answer is no. So whether for purposes of, if you want to carry out the purposes of any audit which is duly defined in section 213, whether you can verify the stock, to me the answer does not to be yes. Then whether the word any other thing and such other things, whether it includes the stock. So my opinion on this is that the words herein used are books, accounts, documents, computer programs, computer software, whether installed in computer or otherwise, and such other things. So यहाँ पे जो word, क्योंकि there is a principle in law which is about the nocitor associates, जो कि कहता है कि just like a man is known by the company he keeps, similarly a word is also known by the company it keeps. तो यहाँ पर जो word जो use किए गए such other things, they have to take color from this books, documents, computer, etc., etc. So these kind of things which are forming part of the wherein the transactions of the assessee are being recorded. So all these things for the section 71 can be carried out for the inspection of all these things and not stocks. So that is my opinion. Although one can have an entirely different opinion. Then how this audit findings, these audit findings have to be concluded. Law says, section 65(6) says, on conclusion of audit, the proper officer shall within 30 days inform the registered person whose records are audited about the findings, his rights, obligations, and the reasons for such findings. Now, this is very important. You do not only have to inform about the findings, but you also have to inform the reasons of such findings. So only findings are not important. Maybe your finding is कि जी आपने IGST का credit आपने access लिया, but you are not telling why he is saying that my IGST credit is more. Now IGST credit can be more due to different reasons. Maybe I have taken IGST, maybe I have taken IGST credit instead of CGST, SGST credit, or maybe I have recorded any transaction, any ITC. I have recorded any transaction of specific transaction of ITC erroneously at a higher figure, or maybe I have taken into account certain IGST invoices which were not at all had been entered by the supplier even in his books of accounts. So this IGST credit can be just by saying that your IGST credit is in excess is not enough, unless and until then that is not a proper conclusion, that is not a proper finding on which these audit findings can sustain. So the reasons for findings have to be given. The proper officer may inform. So once you are met with a show cause notice wherein underlying audit findings are not supported by the reasons, then you can definitely raise an objection. Then the rule 101 sub rule 4 says the proper officer may inform the registered person of the discrepancies noticed, if any, as observed in the audit, and the said person may file his reply, and the proper officer shall finalize the findings of the
audit after due consideration of the reply furnished. So the conclusion of audit. So what is the conclusion of audit? It is not like that you are going to some place, you are doing desk review, you are calling for certain information, he is responding to all your queries, and you sudden jump on to framing the audit report. No, it is not like that. There are certain objections. You will inform the registered person about your objections. He will submit a reply, and then on the basis of that very reply, or maybe even if it does not reply, then according to the circumstances, you will finalize your findings of the audit and not otherwise. Then the rule says on conclusion of audit. Now the audit has been concluded because the findings have been finalized. The proper officer shall inform the findings of the audit to the registered person in accordance with subsection 6 of section 65 in form ADT2. So only once having the assessor being informed about the objections, reasons for objections, taking into account the replies of the assessors to those objections, that you will come to a statutory document ADT2 and not otherwise. Now, this GST audit manual, it says that how this process is to be carried out. It says that the auditor should discuss all the objections with the registered person before preparing the draft audit report. So even before final audit report, there is a draft audit report. But before that draft audit report, the findings, the objections have to be discussed. The registered person should have opportunity to know the objections and to offer the clarification with supporting documents. So first of all, you will discuss objections, and you will give the opportunity to the registered person to know the reasons for those objections, so that if there are any issues of differences between the officers and the assessee, all these issues get resolved. And then this officer who is conducting the audit, he will try to obtain the views of this registered person before preparing a final draft audit. And these objections that have to be met to the this registered person, these objections should also be in writing. And while communicating those objections, you must write that they are not in nature of any show cause notice, and this is only a participative and fact-finding audit which is being conducted, and these are only preliminary and tentative observations. So you do not have to, you have still not finalized your audit finding. You are putting objections. Number one, you should communicate those objections in writing. You should tell the reasons for all those objections. You should also write that this is not a show cause notice. This is a participative audit findings, and all these observations are preliminary and tentative, and they are not final audit objections. Then the registered person will reply to those objections. On the basis of those replies, you will be in a position to frame your draft audit report. It is still not final audit report. This will be a draft audit report. And all these findings, and if one is satisfied with the reply of the registered persons, the findings have to be changed after consultation with Circle DCAC. If the response from the registered person is not forthcoming, draft audit paras should be prepared on the basis of available records after citing the lack of cooperation on the part of registered person in the audit report. And it is the auditors, the proper officer who is conducting the audit, it is his responsibility to explain all the objections and resolve disagreements. Then a very important part of this GST audit manual, it says that the person who is conducting this audit, he has to give suggestions to the registered person for future compliances. That how, if he is finding any discrepancies, then he has to suggest also to the registered person so that he does not commit those mistakes again. So a very important point comes out is that what happens in most of the cases is that no such objections, no such suggestions are actually put forth by the officers. Now, whether in such a situation, we should write a letter to the proper officers. Okay, sir, you have finalized the audit. If there is any discrepancy which you want to bring to the attention of the assessee, that may kindly be informed to us, because what will help
this is in that maybe if at a subsequent stage, if any mistake is found, and now this mistake is continuing even from the period for which audit was conducted, and that remained undiscovered, the assessee will not be held guilty of any fraud, suppression of facts, misrepresentation, etc., etc. So maybe writing such kind of letter to the officer can be of great help to the assessee in the times to come. Now we have to come to this draft audit report. Now this how this draft audit report will be framed. The views of the, it must contain the views of the assessee. Then it should also contain a document that the assessee was told that if he wants to self comply all the objections raised therein, then audit being a persuasive kind of exercise, all these objections can be done away. Then this audit report should be prepared in consultation with the Deputy Commissioner and Audit Commissioner of the Audit Circle. The draft audit report should be finalized within the shortest time span, that is within 10-15 days of the commencement of the audit in the registered person's place and placed before the MCM for decision. Now there is this MCM monitoring committee meeting, means after draft or first of all what happens is that you are putting certain objections in writing, obtaining replies of the assessee, then you are framing a you are providing your findings to the ACDC. Now the draft audit report is being prepared in consultation with ACDC. Now this draft audit report, they are saying that has to be presented within a period of 10-15 days from the commencement of audit in the registered person's place. Now what is this MCM? This MCM is actually convened by the Audit Commissionerate, to which the Executive Commissionerate or his representative should also be invited. So this is a meeting of Audit Commissionerate as well as the Executive Commissionerate, because both of them put their heads together on the draft audit report. Because once if there are any objections which get removed from this MCM, then they will not find place in final audit report. So approved audit objections, including those in which show cause notices are proposed to be issued, should be conveyed to the Executive Commission in the form of minutes of the MCM, who shall respond to these objections, conveying his agreement, disagreement within 15 days of the receipt of minutes of the MCM. So Audit Commissionerate will communicate those findings which should be converted into show cause notice as per its opinion, and then this Executive Commissionerate will communicate its opinion to the Audit Commissionerate. And if still there are certain differences which do not get resolved and they still persist, then the decision of Audit Commissioner will prevail. Now this is something very important. It means even if the Executive Commissioner says that the show cause notice need not be issued, but the Audit Commissionerate says that the show cause notice needs to be issued, then the opinion of the Audit Commissioner will prevail over the Executive Commissioner. So this is the kind of importance that is being attached to the Audit Commissioner. Now these meetings should be held monthly, on the monthly basis. In this MCM meeting, even the application of extended period of application and even the applicability of the provisions relating to waiver of show cause notice, that will also be considered. And if there are certain objections which are removed in the MCM, then these objections will be treated as closed and will not be taken further. Now after this MCM, this final audit report will come into being. Now based on the decision of MCM, the draft audit report should be finalized within 30 days from the date of the meeting. Draft audit report has to be given within a period of 10-15 days of the commencement of the audit, and within 30 days from the this MCM, this final audit report that has to be given. So 15 days taken for draft audit report, 30 days taken for MCM. So total it comes to 45 days. The entire period that has been given for the exercise is 90 days. So the framing of the entire procedure is
like that, so that the entire procedure gets completed within the statutory period. Then this final audit report shall be uploaded on their portal. A copy of final audit report, even if it is a nil report, should be sent to the registered person by email through system, and necessary records confirming such action should be kept in registered person's master file. Now, this is something very important, because what happens is that in most of the cases, the objections are communicated to the assessee. The assessee makes the payment in the form of DRC-03. Then the draft audit report, MCM, final audit report, all these exercises are taken at the end of the audit commissionerate, and assessee never insists upon final audit report. While it is the duty of audit commissionerate to communicate this final audit report, because final audit report is the only evidence you are having that this audit has been concluded. Otherwise, you are not having any such kind of evidence. Maybe the other day you are audited for the same period. If you say, sir, the audit has already been concluded, they will ask you for the final audit report and you do not have any document. So you must insist upon final audit report once the audit has been completed, and that is duly given in para 6.3 of the GST audit manual, that it is the duty of the audit commissioner to communicate by email through system this audit report to the registered person. Now, if there are still certain findings which do not get resolved, then of course the answer to this is the show cause notice that will be issued accordingly the section, whether it is 73 or 74. Now, this is the broad procedure that is being followed for the purposes of audit. Now, coming to since the audit, what audit is, this audit is actually examination of the books of accounts, whether they are maintained or furnished under this law, this GST Act, or that is being maintained or furnished under some other law for the time being in force. So it is very important to take cognizance of what are the provisions, because the entire audit is based on the examination of books and records. So it is very important to understand what are the accounts and records that we are required to maintain and keep and also furnish on demand to an audit officer. So we know the principal provisions are contained in section 35. Now, what is this section 35? We normally say in normal cases, at least the small and medium taxpayers, now they are not maintaining any stock record. They say that law never requires you to maintain stock record. Now let us look at the provisions of the law, whether it actually says that you are not required to maintain the stock records, you are not required to maintain the production records. On the contrary, when you look at the provisions of the law, it says every registered person shall keep and maintain at his principal place of business, as mentioned in the certificate of registration, a true and correct account of the production or manufacture of goods. So you have to duly comply with this provision, and you have to compulsorily maintain such a record which is giving you true and correct account of the production or manufacture of the goods. And you have to keep and maintain. These two words are very, very important, because there is a difference between keep. The words keep and maintain cannot be used interchangeably. Keep is that something is being kept somewhere which is available on demand, and maintenance, you might be maintaining something something elsewhere, but keeping it at elsewhere. For example, you are maintaining your branch accounts at your head office, but you are keeping those books of accounts at your branch office. So you can maintain you can maintain the branch books of accounts at head office, but you need to compulsorily keep those books of accounts at branch office. You maybe by way of taking printouts, maybe taking soft copies, maintaining keeping some kind of soft copies or something like that, but definitely you can maintain at the principal place of business. Now the law says that the books of accounts have to be kept and maintained at the principal place of business. Now these books of accounts, they should give you true and correct account of the production or manufacture of goods, inward and outward supply of goods or services, stock of goods, input tax credit availed. Now, even in the definition of audit, the words used were input tax credit availed. Even when we looked at this rule 101, even there in the scope of examination, it was input tax credit availed and utilized. And even in section 35, also the word used are input tax credit availed.
and it is not just input tax crediting. Then output tax payable and paid and such other particulars as may be prescribed, and these prescribed particulars are given in Rule 56. Now, coming to this is about the books of accounts which are to be maintained as per the provisions of GST law. Rule 5618, it says every registered person shall on demand produce the books of accounts which is required to maintain under any law for the time being in force. So GST law is in audit also, it is talking about the books of accounts maintained under this act as well as under the other laws. Even in the principal provisions relating to maintenance of accounts, they are also talking about both the records under the act as well as the records which are maintained some under the provisions of law, which is called the timing in force, which might be some other law. Now, at what place these books of accounts have to be kept? We earlier read in section 35(1) that accounts have to be kept and maintained at the principal place of business. Now, where more than one place of business is specified in the certificate of registration, the accounts relating to each place of business shall be kept at such place of business. So they need not be maintained at that additional place of business, but they have to be compulsorily kept. So might be they are being maintained at head office, but they have to be kept at branch office. Then Rule 56(7) says every registered person shall keep the books of accounts at the principal place of business and books of accounts relating to additional place of business mentioned in his certificate of registration. So it is same which is written in section 35(1). Then where such accounts and documents are maintained manually, be kept at every related place of business mentioned in the certificate of registration and shall be accessible at every related place of business where books of accounts are maintained digitally. Today, we know all the books of accounts are being maintained digitally. So what is the mandate of the law is that your books of accounts should only be accessible. You can maintain your books of accounts at central place. These should only be accessible at your additional place of business. Now, the period for which these books of accounts have to be retained, these have to be retained for a period of 72 months from the due date of furnishing of annual return. But if your case is in appeal or revision or is before any court or authority, then the books of accounts have to be kept for a period of 1 year after the final disposal of appeal or the period of 72 months, whichever is later. Then regarding the electronic maintenance of records, what the GST law says is, number one can definitely keep and maintain the accounts and other particulars in electronic form, that is duly permitted. Then if there is any register or document is maintained electronically, a log of every entry edited or deleted shall be maintained. So this is something very important, that your software should contain the log of all deleted, modified entries. So that is the mandate of the law. If the other day the auditor officer gives a finding that he demands from you the log of all those entries which have been modified or deleted, and you say, sir, my software does not maintain such a record, then the officer can impose on you a general penalty under section 125, 25,000 CGST, 25,000 SGST, general penalty of 50,000. Then the law says the record under the provisions of the chapter may be maintained in electronic form, and the record so maintained shall be authenticated by means of digital signature. So the entire record should be duly authenticated by digital signatures. Then electronic backups have to be compulsorily maintained. The officer comes to your place, he asks you for backup. You say, yes, you say, sir, this is the only hard disk where I am saving in my entire record. He asks you, if the other day your premises is caught with fire and your entire record gets destroyed, have you planned for that day? And you say, no, sir, I am not having any kind of such backups or security issues. Then in that case, you can be met with general penalty under section 125, equivalent to rupees 50,000. Then the registered person maintaining electronic record shall produce on demand the relevant records or documents duly authenticated by him in hard copy or in electronic readable format. So whenever the electronically maintained records are called for,
you have to give them in the form of hard copy or electronically readable format as they are required. Then on demand, the registered person has to provide the details of files, passwords of such files. If the officer asks you for the password of your accounting this software, then you have to pass on that software to that officer. Then the rule 56 says that you have also to maintain the true and correct account of the goods or services imported or exported, as well as the supplies which are attracting reverse charge. Then other than composition dealer, the composition dealer is exempt, but the other persons have to maintain account of the stock in respect of goods received and supplied, opening balance received, supply, goods lost, stolen, destroyed, written off, disposed of by way of gift or free sample, and the balance of stock, including raw material, finished goods, scrap, and wastage thereof. So, composition dealer need not maintain such a record, but every other registered person has to maintain this record. Then the advances received, paid, and adjustments. This record has also to be maintained. Then the account of tax payable, collected, paid, ITC claimed, register of invoices, debit credit notes, delivery challans, etc., etc. All this record has to be maintained. Then you have to maintain the name and complete addresses of the supplier. Now, they are not requiring you to maintain the mobile. Now, when a supplier is issuing you an invoice, if he's a registered supplier, in his GST and being a PAN based, you are also having his PAN. But the law does not require you to maintain the Aadhaar or mobile number of that supplier. But if it is a case of unregistered supplier, still you have to maintain the name and complete address of that supplier. Sorry, if it is a case of unregistered supplier, because the name and complete address of the supplier has to be maintained only if you are receiving goods or services which are chargeable to tax under this act. Now, the law is saying that you have to maintain. You see these issues will also have impact on your income tax assessment, because the other day your assessing officer under the income tax law can say that, maybe you say that under the income tax law I am not required to maintain the name and complete address of the suppliers. He can say, sir, you are mandatorily required under the GST law to maintain the name and complete address of the suppliers for the goods and services chargeable to tax under this act. If he is an unregistered person, he is supplying you some goods and services which are chargeable to tax under this act. Still, you have to maintain his name and complete address. If he is providing, even a registered person is providing you exempt goods and services, you need not maintain his name and address. But if a person who is a unregistered person, he is providing you certain goods or services which are chargeable to tax, then you have to maintain name and complete address. And if you are not doing so, then the penalty under section 125 might get invoked. Then, so far as the customers are required, you have to maintain the name and complete address only if it is required by the law. Now, under Rule 46, you have to maintain the name and address of the customer only if your supply is more than 50,000 and not otherwise. Then you have to also maintain a record of the premises where the goods are stored, even including the goods which are stored during transit, maybe when the goods are at the stage of transportation, along with the particulars of the stock stored. And if you are not maintaining such a record of the premises, because you see, they are not asking you that, of course, you must furnish all your places of business in your REG 06. But even if you are not maintaining, you have not furnished all your places of business in REG 06, but you are maintaining a record of those premises, maybe say in some register, which you can readily produce whenever it is asked by some officer. And in case you are not even maintaining that kind of record, and if there are certain taxable goods which are found to be stored at a place for which you have not been able to produce record,
and these goods are not even covered by invoice, then these goods shall be deemed to have been supplied and the tax will be charged. So if any excess stock is found from your place, then this stock can be treated under section 566 and the tax can be charged accordingly. There is a similar provision in section 35(6) which says that it's subject to the provisions of clause H of the subsection 5 of the section 17. When the registered person fails to account for goods or services or both in accordance with the provisions of subsection 1, the proper officer shall determine the amount of tax payable on goods or services or both that are not accounted for, as if such goods or services or both had been supplied by such person, and section 73 or 74 as the case may be, shall mutatis mutandis apply for determination of such tax. Now the issue arises if, say, I am not maintaining the stock records, or maybe I am not maintaining production records. Whether in such a case section 35(6) can be invoked against me. If you carefully read through section 35(6), it says that if where a registered person fails to maintain or fails to account for goods or services in accordance with previous section, subsection 1. So what is happening in this case is that the person is failing to maintain these books of accounts in accordance with previous subsection 1. Then the proper officer shall determine the amount of tax payable on the goods or services or both that are not accounted for. Now here, when they are saying that the proper officer shall determine the amount of tax payable on goods or services or both that are not accounted for, here they are not saying that the that are not accounted for in accordance with previous subsection 1. So my view is that there is a difference between goods or services which are not which the registered person has failed to account for in accordance with previous subsection 1, with goods or services that are not accounted for. There is a difference. So the law says that you have to levy tax only on the goods or services that are not accounted for, and not only because they are not accounted for in accordance with subsection 1. So the tax should not be levied merely because you are not maintaining your production records. Then if you are maintaining manual accounts, you are maintaining a number of books of accounts, and then you have to give serial number to every volume of those books of accounts. Then if there are certain documents relating to registered person which are found at some other place, which is not mentioned in the certificate of registration, but they belong to the registered person, then it shall be presumed that these are being maintained by the registered person. Then there are certain books of accounts which have to be specifically maintained by the agent. They are the particulars of authorizations that are received, description, value and quantity of goods or services received, description, value and quantity of goods or services supplied, detail of accounts furnished, etc., etc. Then manufacturer, this is again a very important category. He has to maintain monthly production accounts, giving quantitative details of raw material or services used in manufacture and quantitative details of the goods so manufactured. So number one, he has to maintain monthly production account. He has to provide quantitative details of raw material services consumed. And number three, quantitative details of goods manufactured. Then service provider has also to provide quantitative details of the goods used in provision of services. Works contractor, he has to maintain record of name and addresses of the contractors, description, value of the goods or services received, description, value and quantity of the goods or services utilized, details of payment received, name and addresses of the suppliers. Now, again, this is about that this entire audit, this is basically a risk-based exercise. I'm not dwelling much on these aspects, and would now this is a list of different risk parameters on which a taxpayer is PPT will be with you. You can go through this. I just want to, because it is already 8:45, so I want to come to the issues. Yes. This is the last slide.
else I will take the discussion that might happen, that might arise from the discussion that we will dwell into, or if there are any queries which are raised from the participants. So I have taken the most common issues that arise during the audit. The first issue that arises is regarding the reverse charge. And though we know that right now there is no reverse charge, so far as the supplies from the unregistered persons are concerned, because now that is very limited to certain categories of persons. But since still the 17-18 audits are in progress, so the officers are continuously throwing up the issues of reverse charge, even if the supplies are from unregistered person. For this, we have to, when we are replying to such kind of thing, then we have to take note of certain notifications. First is the notification 8/2017. Now this 8/2017 basically provided complete exemption from reverse charge from the supplies from unregistered person on the supplies below rupees 5,000. Then there was another notification issued on 13th of October 2017, that is 38/2017, where the full exemption from the supplies from the unregistered person was provided to a registered person till 31st of March 2018. Then there came another notification 10/2017 18, and it was issued in the March 18, and this exemption was extended to 30th of June 2018. Then there was again another notification 12/2018, and the exemption was carried forward to 30th of September 2018. And then again there was another notification 22/2018, wherein exemption was further extended to 30th of September 2019. So what happened was that the exemption was the period from 1st of July 2017 till 13th of October 2017 was period when the tax could have been levied on the transactions above rupees 5,000. Then thereafter, in the successive notifications, the exemption was given, and that was extended to 30th of September 2019. But in the middle of 2018, there came CGST Amendment Act 2018, which was made operative on 1st of February 2019, and the section 9(4) was abolished, and a new section 9(4) was rechristened, and that was made applicable to only to certain very limited class of persons. So what I want to state is that these supplies from the unregistered suppliers, they are, first of all, they are taxable only for a very limited period, that is from 1st of July 2017 to 13th of October 2017, number one. Number two, for transactions below 5,000, there is no tax. Number three, you have to take cognizance of the provisions of the time of supply of services, that is section 13(3). So it is not your date of invoice. The time of supply is the date of payment or 61st day from the date of issue of invoice. So maybe even if you are receiving certain invoices in the month of October, but the payments have been made subsequently, then you need not pay taxes on those payments. And even if you are receiving certain invoices in August, for which maybe say on 15th of August, and the payment is being made subsequent to 13th of October 2017, you might not be required to pay taxes even in respect of those invoices. So you have to, while dealing with such a situation, you have to consider the restricted time period plus time of supply provision under section 13(3). Then another very popular issue that arises is regarding the reverse charge on freight. While dealing with such kind of issue, as we know that the goods transport agency
is taxable, but at the same time, the goods transport operator is duly exempt under notification 12/2017. And there is a flyer that has been issued by CBIC, which says that in the cases where the consignment note is not being issued, all these cases shall not be met with this reverse charge liability, and the reverse charge liability will be met with only in cases where the consignment note is being issued. And the importance of consignment note has also been spelled out in this GST flyer. It says that the consignment note actually puts a responsibility on the transporter, which is not otherwise cast upon the transporter, and the transporter charges for putting that responsibility. So when the consignment note is not being issued and the goods are being just carried in tempo or something like that, or maybe in some kind of specialized vehicle for which consignment note is not required, then in such a situation, the reverse charge need not be paid. Plus, the exemption of below 750 that has been done away only from 18th of July 2022, but all the past periods, the person enjoys that exemption up to rupees 750 that has to be taken into account. Then, while accounting, we normally put the loading, unloading, even the purchases, even the purchase invoices where the freight is being separately charged, which is a part of composite supply of purchase, that is also sometimes gets posted in the head of freight, and we have to take cognizance of, we have to bifurcate all these things, and we need not pay taxes on reverse charge. Then another very important entry so far as the reverse charge is concerned is the legal services. Now, legal services, if they are taken by a business entity and this business entity is having turnover below above that threshold, then definitely the tax shall be payable and it has to be discharged accordingly. Then the security services. Now, this reverse charge, we have to take a cognizance of that. This was introduced on 25th of January 2018. Before, for the periods before that, this reverse charge might not be applicable. So we have to take this fact into account. Then another very important objection that is normally raised in audits is the mismatching between this 2A and 3B. And the impugned periods, there are multiple periods, 17, 18, 18, 19, 19, 20, etc., etc. Now we know this 2A, this was not even available in the 17, 18. And it came somewhere in 2018, maybe in the August, September or October. And this fact even has been duly taken care of by Gujarat High Court in Deepak print, where they have said that the court has pronounced that this GSTR 2A actually came in maybe say in the year 2018 and was not even available in 17-18. So how you can raise the liability on the basis of a document which was not even in existence in 17-18? Even the Supreme Court in Bharti Airtel has said that this 2A, that is just a facilitating document, and the ITC has to be taken on the basis of assessor's own records. Because earlier, in what happened in this case was that the Delhi High Court decided in the favor of the SSC. Delhi High Court said that now the plea of the SSC in this Bharti Airtel was that since 2A was not available in 17-18, I could not properly take my ITC. When I took the ITC on the basis of this 17-18 document, I found that my ITC was much more as compared to what I had taken. Now the time for taking that ITC has lapsed. Delhi High Court said that the SSC should not suffer on account of default by the department, and the decision was given in the favor of SSC, and the ITC was allowed to the SSC. But when the matter came before Supreme Court, the Supreme Court said that the 2A is only for a viewing facility. You have to take ITC on the basis of your own records, and you do not need to go to 2A for checking what is right and what is wrong. That is only for confirmation purposes. So we can take benefit of those observations that have been put into place in case of Bharti Airtel for pleading before the in the GST audit that this 2A is just a viewing facility. Then again, there is a press release that has been issued by
department itself, which says that 2A is only a viewing facility and you need not take ITC on the basis of 2A. Then one more very important objection that is raised in audits is ITC reversal on the exempt supplies. Now we know rule 42 and 43, they have to be complied with. There is a complete methodology for reversal of exempt supply that is given in rule 40 to 43. That first of all, you have to take total ITC. From that, you have to deduct your ITC for non-business purposes, for exempt purposes, and even ITC that is attributable to fully taxable supplies. You have to take out all those ITC, come to the common ITC, apportion that ITC, then add 5% of ITC towards non-business purposes, and then ineligible ITC along with this duly apportioned ITC that has to be reversed. So far as rule 42 is concerned. For 43, again, there is a very specific methodology given that all the assets from the date of invoice, you have to divide your ITC by 60, arrive at monthly ITC, accumulate the ITC, apportion it according to the exempt sale, and accordingly make a reversal. Then it comes the issue of charging of interest. Now what the authorities are doing is they are saying that on the basis of your monthly bifurcation of your ITC, we will be charging interest on a monthly basis from say from the month of July. If you are filing your return in the month of September next year, we will be charging you interest from 20th of August 17 to, say, if the return was filed in January 2020 annual return, and you have paid DRC 03 for exempt supplies reversal at that point of time, then they are saying that we will charge you interest for that period. But again, they are taking a wrong stand, because as per rule 42, the interest has to be charged only from 1st of April of the following financial year. So these points we have to take cognizance of. Then there are certain issues relating to refunds that are arising, because in the inverted duty rated structure, we are not allowed refund of services, we are not allowed refund of capital goods. Even in case of refunds of unutilized ITC for exports, the refund of capital goods is not allowed, and the department is minutely looking at those refunds. And as of now, we know that even if some refund has been wrongly claimed, the department has come out with a procedure of recrediting that refund to your credit ledger. So you can definitely go to the department. There's an instrument that has been introduced by the department, that is the PMT 03A, through which this credit might get recredited. The refund that might get recredited to your credit ledger after, of course, after paying the amount through DRC 03, along with interest and penalty if it is applicable. Then another very important objection that is that we are facing is regarding the certain heads which are, or certain incomes which are appearing in your computation of income, like rent. Now normally the rent that is for residential purposes, that is an exempt entry. Of course, we should know that recently there has been change that even renting of residential dwelling for residential purposes, that is given to a registered person. That is no more an exempt entry. But so far as the previous years are concerned, earlier years are concerned, the renting of residential dwelling unit for residence purposes, whether it is to a registered or an unregistered person, that is exempt. But if it is a case of renting of commercial unit, then definitely it is taxable. And while you are paying GST for your normal commercial transaction, the people normally forget to pay GST on rental part. So that is an objection that is being raised. Then coming to this incentive, now the suppliers are giving you incentive, then you have to consider whether this incentive, whether this is a reverse supply by the supplier. If it is a case of reverse supply by the supplier, you are liable to tax. But if it is in the nature of discount, and or maybe say it is for the mutual benefit
of the supplier as well as the recipient, then the tax need not be paid, and there is a very whole lot of discussion, there are authority for advanced rulings like I think in Santosh distributor something like, which are against the SSE. But then there are so many suspect rulings which are in the favor of SSE, which might take one more complete session to discuss, to have this in this kind of a tired discussion. Then interest is again a very important component. Of course, interest is exempt, but when you are calculating that interest for, say, for the purpose of your aggregate turnover, then this interest part has also been taken into account, although it is exempt, because aggregate turnover also includes exempt supplies. Then quantitative stock calculations, we discussed that maybe during the audit, we cannot verify your stock, but maybe he can compare whatever stock is coming from your balance sheet and compare it with the stock which is coming from your GST record, because stock as per your GST record in the form of inward supplies is available from your purchase invoices. The indications of purchase invoices are available in the two-way easily. Maybe in the case of trading concern, a stock can be framed. And so far as this supply side is concerned, the stock can be available in table 13 of GSTR1, or even it can be available in table 17 of this GSTR9. So once if we make such a calculation and compares it with the balance sheet figure, then instead of coming to such a difficult position, this SE should himself self-check whether there is already an internal check of calculation of the stock, because this can jeopardize the position of the SSE. Then a very popular objection with the officers, with the audit officers, is the repairs, building repairs. Now they are bent upon treating it as an ineligible ITC, while the provision of section 17(5) clearly say that the goods or services which are used in the construction of immovable property. Now the word construction is duly defined, that it covers repairs, renovation, etc., only to the extent it is capitalized. So if your repairs are not capitalized, the IT should be duly available. Now, then they also ask for suppliers which are outstanding for more than 180 days. By giving such a figure, you must take cognizance of that. Might be there are certain creditors who are even outstanding before GST era, or maybe there are certain creditors on which ITC has not been taken. And also provide the figures of subsequent payment to these creditors, so that only interest issue arises. Then in most of the cases, what is happening is that the goods are being sent to job worker for job work, but the ITC 04 is not being filed, because there is no penalty for delayed filing of ITC 04 right now. In the businesses having turnover above 5 crores, it is required to be filed after 6 months, every 6 months. In other businesses below 5 crores, it is required to be filed on annual basis. But if you look at the provisions of section 143, it says that it is only if you are following this procedure of ITC 04, the goods being sent to the job worker shall not be treated as supplies. So the other day, if the officer charges you that since you have not filed ITC 04, so all the goods that have been sent to the job worker shall be treated as supplies made by you, then the assessee might get into a difficult position. Then there are differences between 3B and R1. We know 3B is regarding all the taxes that have been paid, and R1 is regarding the statement of outward supplies. So when the R1 figure is lesser than 3B, there is no problem. But once the R1 figure is more than 3B, then one needs to establish with the help of books of accounts that the figure of R1 is an incorrect figure, and the reconciliation between R1 and books has to be prepared. Then a very important objection that is raised is regarding the purchases being made from the cancelled dealers. And normally what happens is that when the supplier registration is cancelled, if it is cancelled from the subsequent date, then the audit officers normally do not pose much
difficulty to the assessee, but when it is a cancellation from retrospective effect, maybe say if the cancellation has taken place from 1st of July 2017, then the officer is bent upon rejecting the entire ITC of the registered person who has taken supplies from this cancelled dealer. Now there is a important decision that has been recently given by Calcutta High Court in case of Sanchita Kundu and another, wherein it has been said that if it is a case of genuine buyer and at the time of subscribing those supplies, the registration of the cancelled dealer was duly alive, then there is no harm in availing this ITC. Maybe you can take benefit of this judgment. Then for a merchant, for a manufacturer exporter who is providing goods to a merchant exporter, the exports are taxable at the rate of 0.1% as per notification 40/2017 of CGST and 41/2017 of the IGST. But this concessional rate of tax is not without hassles. Now, what are the hassles which are there? Gauraji, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So when there are exports which are at the rate of, when you are looking at export 0.1%, then you need to comply with the entire set of instructions that is given in this 40/2017. It says, number one, you have to intimate the purchase officer to your jurisdictional officer. Then you have to take a document of the say from this supplier that he is duly associated with some kind of export promotion council. Then after completion of supplies, you have to inform the jurisdictional officer about the completion of supplies. Then this shipping bill, your shipping bill should also contain your name as manufacturer exporter. The shipping bill of the merchant exporter should contain your name as manufacturer exporter, and then the goods should directly move to the port. So these are the conditions that have to be complied with. Once you are not completed with these conditions, you might be in a position of difficulty, and instead of 0.1%, the audit officer can call for taxing the transaction at the rate of 18%, and then in such a situation, your buyer will not be reimbursing you those taxes. So with this, I am resting my deliberations and would like to have queries if there are any. गौरव जी, queries हैं कोई? Anyone having any query? अगर किसी की कोई query है तो please raise your hand. अमन कुमार जी की कोई query है, मैं उनको allow करता हूँ. अमन जी, please ask your query. Hello. हाँ जी अमन जी. Hello sir, good evening. हाँ जी, good Sir, evening. actually in one of our clients, a departmental audit is going on. So what practical difficulties we facing right now, that for the period of 17-18 and 18-19, there is some software issue due to which we are unable to provide the trial balance state-wise. Actually, we have 4 to 5 locations all over India, and we prepare the accounting on consolidated basis. But the department audit is going on for Delhi location only, and they are asking for the trial balance of Delhi only. So we are facing this difficulty that we are unable to provide the trial balance for that location only, as we cannot extract it from the system. So what should we do in this case to convince the officer? You see, so far as section 35 is concerned, or so far as
Rule 56 is concerned, Yes, sir. they require in case of registered person the record of outward and inward supplies. Right. And there is no bar that you cannot have consolidated accounts. Even Right, sir. if you look at the GSTN 9C, if you look at GSTN 9C, what it states is that from your annual audit accounts, you have to deduce a figure of sales, the cumulative total of, and all those respective units should tally with the figure of your this balance sheet or profit and loss account. Yes, sir. So there is no requirement under the law to maintain individual trial balances for the individual locations. Yes, sir. But what Actually, yes, sir. but what is happening in this case is that you are for all those 4 to 5 locations. Now first of all, we have to deal with what practically the situation is like. If of course this might this will be a case of accounting being done centrally. Right, sir. It is like that. Okay. Right. Now we have to look at if this accounting is being done centrally, and you have a situation where you are having sale and purchase booked, and there is only one bank account in which all the proceeds are being banked. Then in such a situation, even if the proceeds are being banked in one account, you can definitely have individual trial balances of all those locations by saying that if there is a sale that you are recording, and even if the debtors account is at head office, then you can credit your sale and debit head office, and similarly head office can do so. So practically, I do not see that even if you are maintaining your accounts, because even in your accounts you might be maintaining multiple companies. Is it not like that? Even if the accounts, Amanji, Yes, sir. even in your accounts, maybe you are not having individual trial balances, Right. but you in the one software you might be maintaining multiple companies. Right, sir. So if you are maintaining those multiple companies, they will be having cross transactions with head offices and branch offices. Yes, sir. Correct. So that kind of reconciliation, I think, can be easily done, even if you want to produce that Yes, trial. sir. So we can provide a reconciliation which we have prepared on our own Yes. for our 9 and 9C, and Yes. they should agree to that, right? Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Ashok ji, please ask your query. Ashok ji. Yeah. Good evening, Vinmar sir. Good evening, Ashok ji. जी सर, हम लोगों का 4-5 जगह पे रजिस्ट्रेशन है, एंड जीएसटी ऑडिट फॉर अहमदाबाद इज गोइंग ऑन, बट वी आर नॉट मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स एट अहमदाबाद साइट, एंड वी आर मेंटेनिंग एट एचओ ओनली इन सैप सिस्टम. तो अहमदाबाद में तो सर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के छोटे मोटे खर्चे वगैरह के, कन्वेंस वगैरह के रहते हैं. अदर देन दैट इनवाइसेस और जितने भी उसके परचेज बिल और ये सारा सेटेलाइट मेंटेन होता है अंडर सैप इन मुंबई. तो वो आपने बताया कि हमें प्रिंसिपल प्लेस में भी कुछ रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़े. अगर हमने नहीं रखा तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस सर फॉर दैट? नो, यू हैव टू, नहीं देखिए, वहां पे जो लॉ है ना, जो सेक्शन 35 है, जी वो सर. आपको कह रहा है कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, वहां पर यू हैव टू कीप एंड मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ 1 2 3 4 5 6. ओके, जी सर. जी सर. फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि इफ यू आर हैविंग प्लेसेस ऑफ बिजनेस apart from your principal place of business, in your certificate of registration, you sir. have to keep the related books of accounts at that place of business. अब वहां पर लिखा हुआ है कि you have to keep your related books of account at that place of business. Books of accounts might be maintained at some other place of business. तो अब अगर आप मान लीजिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप हेड ऑफिस में रख रहे हैं, कहीं पर बॉम्बे में या दिल्ली में कहीं पे भी रख रहे हैं, ठीक है, और वहां पर वो एक्सेसिबल है वहां से. ओके, अच्छा. अगर वो मतलब क्योंकि जो रूल 56 है वो ये भी कहता है ना कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है एट रिलेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस, दे शुड बी, जो उस प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, दे शुड बी एक्सेसिबल. जी सर, वो तो सैप में कहीं से कहीं देख सकते हैं सर.
सैप में जी। बस हाँ, वहाँ SAP वाउचर वगैरह नहीं मिलेगा फिजिकल, या फोटो कॉपी वगैरह नहीं मिलेगा। हो सकता है सैप में कुछ मेंटेन हो तो वहाँ फोटो नहीं सर, कॉपी नजर भी आ जाए। सैप में तो सर ट्रायल बड़ा इजी निकल आता है। आप उसमें जैसे मेरे ख्याल से शायद उसमें कमांड होती है ना F08। जी सर, जी सर। हाँ, तो F08 से निकल आएगा। जी सर, लेकिन हम लोग साइट पे मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो सो उसका कुछ कंसिक्वेंसेज है सर, कुछ पेनल्टी वगैरह? वो कह रहे हैं कि हमारी पेनल्टी है कुछ सर। साइट से देखिए ना, देखिए जो सैप में क्या है कि लोकेशन कोड तो रहता है ना उसके अंदर। हाँ हाँ हाँ, वो तो रहता है सर। हाँ, तो लोकेशन कोड से तो ट्रायल निकल आएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है नहीं, सिर्फ ट्रायल नहीं, वो लोग वो फिजिकल कॉपी ऑफ इनवाइसेस, फिजिकल कॉपी ऑफ सेल सर। इनवाइसेस, सर अगर तो तो मैंने। सैप में है तो सैप से तो सब इन्फॉर्मेशन निकल आती है। ओ ओके ओके, अगर नहीं है, नहीं अवेलेबल हो रही है तो कुछ पेनल्टी है सर क्या सैप सर? में देखिए, सैप में अवेलेबल है ये तो, मतलब आई एम श्योर फॉर दैट कि सैप के बारे में। बट सर, वन ऑफ द कंपनीज इन टैली आल्सो, टैली में अवेलेबल नहीं है सर। एक तो सैप में है, वो तो मिल जाता है, टैली में नहीं है होता है सर। वो 9, वो जो ईआरपी वाला सिस्टम है ना 9 वाला, वो उसमें भी नहीं है सर। सर अगर अगर देखिए ऐसे है, अगर आप देखिए, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है ना। हमें मालूम है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहां पर कैसे बनाया जाता है, कि जब जहाँ पे हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पे जी जो सर। अदर लेग ऑफ ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कहीं पर सेल और परचेज ही मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। अब वहां पर आप रिटर्न तो फाइल कर रहे हैं ना वहां पर, ठीक है, और उसकी प्रोसीड जो है किसी ना किसी बैंक में डिपॉजिट हो रही है, वो तो ठीक है। कॉमन, जैसा आपने बताया सर, कॉमन बैंक अकाउंट होता है सर। कॉमन बैंक अकाउंट में हो रही है, ठीक है ना। हाँ अब हाँ। इसका मतलब हो गया कि आपका सेल अकाउंट क्रेडिट होगा और हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट होगा। जी सर। तो आपको तो सिर्फ हेड ऑफिस अकाउंट रखना है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, हेड ऑफिस अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं सर जी, सिर्फ डेबिट क्रेडिट उसको क्रेडिटर्स और डेटर्स को करते हैं सर। हम्म। पार्ट वाइज नहीं रहता है सर, मतलब स्टेट वाइज नहीं रहता है सर। टैली में छोटी कंपनी है ना सर, बड़ी में तो मेंटेन तो रखते आप हैं उसमें नहीं, तो वो आप लोग। उसमें आप उसमें ऐसा कर सकते हैं ना कि आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप सेल की बाइफरकेशन, सेल और परचेज की बाइफरकेशन दे दीजिए ना। जी वो तो दे दिया सर, वो हाँ दे बस, दिया। हाँ बस। वो तो हमें 9 और 9C के लिए बनाना ही पड़ता है, वो हाँ दे दिया है सर। बस हाँ। वो कह रहा है कि बुक्स और रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन नहीं है, फॉर दैट आई विल पुट सम पेनल्टी। तो वो 125 में ही जनरल पेनल्टी लगेगी, 25,000 की मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इफ यू आर नहीं 25,000 सी में और 25,000 एस में, पर ओ आप ऐसा कहते क्यों ना, आप उसको बोले कि जी ये सारे कंप्लीट हम्म, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैली का सॉफ्टवेयर आपको दे देता हूँ, निकाल लीजिए यहाँ से। ओके ठीक है सर, हाँ ठीक है। हाँ। यस सर, थैंक यू वेरी मच थैंक सर। सर मीनाक्षी जी की क्वेरी है, व्हाट सर अबाउट एक और था ट्रेडर्स सर, हु सेल टू मर्चेंट एक्सपोर्ट? रूल यू। 42, रूल 42। हाँ जी, बताइए बताइए सर। सर मीनाक्षी जी की क्वेरी है, व्हाट अबाउट ट्रेडर्स हु सेल टू मर्चेंट एक्सपोर्ट? ये किस संदर्भ में पूछी इन्होंने? मीनाक्षी जी, क्या आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं मीनाक्षी जी? मीनाक्षी जी, प्लीज आस्क योर क्वेरी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। मैसेज, इज इट कंपल्सरी टू हैव डिटेल्स इन शिपिंग बिल? माइक भी ऑन है उनका। मीनाक्षी जी, प्लीज आस्क योर क्वेरी। Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग जी। Is it compulsory to have the details of the buyer in the shipping bills? For notification 40/2017, Yeah, yeah. 0.1%. If we have sold to a merchant Definitely, exporter, definitely. It is one of the conditions. It is one of the conditions of that notification. and if the that buyer has not mentioned our details, then is there any Then you penalty? should not be charging 0.1%. Na? Okay, If the shipping bill of the buyer is not containing your details okay, and your GSTN, which is one of the compulsory condition in 40/2017, maybe the other day you can litigate that this is mainly a procedural hassle. But normally what happens is when the goods are directly exported to transported to the port, normally the shipping bills do contain such kind of details. okay. If we have sold to the merchant exporter and then he has transferred to the port, then in that No, case, no, in shipping that bill. case 40 bar is not applicable at all. Okay, Because once the goods reach the storage place of the buyer and then subsequently they are taken to port, then 40/2017 even does not come into play.
Okay, in that case, we have to just clarify that it is we have sold the goods to the buyer and not directly Yes, we and have. charge 18% tax. Okay, thank you. Okay. Sir, I don't think anyone having any query right now. Thank you very much, Vinamr Gupta जी. बहुत बहुत Thank आपका you, sir. धन्यवाद. Thank you. आपका ब्लेसिंग्स और आपका ज्ञान हमारे ऊपर रहता है. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल भी मैंने इनको एक कहानी सुनाई थी सबको कि कैसे चाणक्य जैसे गुरु ने चंद्रगुप्त जैसे एक बच्चे को राजा बना दिया था. ऐसा गुरुओं का ज्ञान होता है और ऐसा एक टीचर का समाज के अंदर योगदान होता है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनलाइटिंग Thank you so ऑल much. द प्रोफेशनल्स. Thank you very much. Thank you. And happy Deepavali to you all in advance.